Hello everyone, welcome to India's largest learning platform, that is Unacademy. We always try to begin our preparation with the standard books, but today I will start with the basic NCERTs. Basic NCERT of class 6th, that is Social and Political Life Part 1. Before going into the topic, let me first introduce myself. I am Megha Goyal. I have written UPSC Mains twice in 2017 and 18, and I have written SSC CGL Prelims exam also in 2018 and RBI Grade B Officer exam in 2015. Let me tell you something about this platform, that is Unacademy. Just like me, there are brilliant educators on this Unacademy subscription. They teach live and the live sessions are recorded, so you can watch it whenever you wish to study. In this profitable Unacademy platform, you can find Unacademy tutors who provide schedule and topic-wise preparation for n number of exams. So, if you take 6 months subscription on Unacademy, brilliant classes on daily basis takes place, which provides consistency, revision, doubt clearance, test papers, easy understanding to your preparation. By getting one subscription, you can watch all the educators. Also, you can use my code and get 10% discount. So now let's begin the topic, that is Unit 1 of Diversity. So chapter 1 is Understanding Diversity. So this is our topic, Understanding Diversity. Before going into the topic, let me first explain you what is inequality, why there is inequality, how it comes. You just think about it, why there is inequality around your society. You will think that education makes the difference, girl or boy makes a difference, but I will tell you what is the main problem that creates inequality. So, here we will try to understand inequality in detail. Inequality. Inequality takes place when there are lack of. This is a very key point. You must memorize it. Lack of. First, resources. And second is opportunities. Just think about it. If the resources are less and opportunities are not with one person, then that person is unequal compared to the other person. Let's take an example of a rich person and a poor person. So दोनों के बीच में क्या difference है? Inequality when it is created, तो ये हमें lead करती है rich और poor में भी देखने मिलती है. Second है हमारे example caste system. कास्ट सिस्टम भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है. कास्ट सिस्टम जो है ये इरिवर्सिबल सिस्टम है. इसमें भी हमें इनइक्वालिटी देखने के लिए मिलती है. सेकेंड, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डाइवर्स, व्हाट इट इज कॉल्ड डाइवर्सिटी. सो टू अंडरस्टैंड दिस, फर्स्ट वी विल सी why a certain region is called diverse.
certain region is called diverse when it is derived from a unique history. A unique history creates a region diverse, or else the people who are living there, they adapt to the geographical area of that region and makes it diverse. So diversity comes when there is unique history involved. तो कोई यूनिक हिस्ट्री उस जगह से अगर रिलेटेड होगी तो वो जगह हमारी डाइवर्सिटी में आ जाएगी. जैसे कि वी विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ टू प्लेसेस, दैट इज लद्दाख एंड केरल. तो इन दोनों के बीच में वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डाइवर्सिटी. सो फर्स्ट वी विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ लद्दाख. So first of all, Ladakh, it is desert in mountains. It lies in eastern part of Jammu and Kashmir. So eastern part of Jammu and Kashmir में हमारा लद्दाख है. यहाँ पे no rain is found. यहाँ पे रेन नहीं होती है एंड स्नो रहती है मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर. सो मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर में यहाँ पे क्या रहेगी? स्नो. सो लद्दाख के बारे में हमने एक ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ईस्टर्न पार्ट में आता है, यहाँ बारिश नहीं होती है और यहाँ पे स्नो रहती है मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर में, और ये एक डेजर्ट है इन माउंटेन्स. अब यहाँ पे हम एक और चीज जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के एनिमल्स कौन से होते हैं जो लद्दाख को डिफरेंट बनाते हैं. सो एनिमल्स में आएंगे फर्स्ट इज शीप. एज वी ऑल नो कि पश्मीना के बारे में आपने सुना ही होगा, पश्मीना वूल. तो ये पश्मीना शॉल जो होती है, ये शॉल कहाँ से बनती है? ये शीप से ही बनती है और ये फ्रॉम कश्मीर आती है, पश्मीना. एंड द सेकेंड एनिमल वी विल टॉक अबाउट इज डिजॉस. डिजॉस इज द सेकेंड एनिमल. इसको बोलते हैं याक काउस. सो दिस इज द सेकेंड एनिमल. तो अब हमने ये समझ लिया कि लद्दाख की ज्योग्राफिकल एरिया, वहाँ के एनिमल्स कौन से पाए जाते हैं. फिर लद्दाख से हमें बहुत सारे पासेस होते हुए जाते हैं, पासेस. ओके, नाउ वी विल लर्न अबाउट द रिलीजन्स विच आर फाउंड इन लद्दाख. तो रिलीजन्स में जैसे कि यहाँ पे पहले हम ये समझेंगे कि तिब्बत है, तो इसको लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है लद्दाख को. बट व्हाई इट इज कॉल्ड लिटिल तिब्बत? बिकॉज तिब्बत में जो हमारा बुद्धिज्म था, इट रीच्ड वाया लद्दाख. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड लिटिल तिब्बत. सेकेंड है इस्लाम, जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था. इस्लाम इंट्रोड्यूस हुआ था यहाँ पे 400 years ago. ओके, लद्दाख में रिच ओरल ट्रेडिशंस हैं, जैसे कि हमारे पोएम्स हो गए, सॉन्ग्स हो गई. तो ये हमारी ओरल ट्रेडिशंस में यहाँ रिच हैं. बहुत सारे लोग यहाँ पे ये परफॉर्म करते हैं लोकल वर्जन्स ऑफ तिब्बतन नेशनल एपिक जो है, तिब्बतन नेशनल एपिक. इसका नाम हमें याद रखना है, केसर सागा.
So it is very important. Okay, it is sung by and performed by both Muslims and Buddhists. So it's very good. Now we will move on to the next area, that is Kerala. So Kerala lies in the southwest corner of India. हमारा केरल है, as we all know, and it is famous for what? Spices like cardamom, cloves, pepper. So famous for spices. Okay. Now we will understand the traders which came to this area. First came the Jewish and Arab traders. Opposite of Christ, St. Thomas 2000 years पहले यहाँ पे आए थे, and he credited with Christianity in India. तो Christianity in India ये कौन लेके आए थे? Opposite of Christ, St. Thomas. So इन्होंने क्रिश्चियनिटी लाई थी इंडिया में. आप लोगों ने सब लोगों ने इब्न बतूता का नाम सुना ही होगा. सो इब्न बतूता 700 years ago पहले यहाँ पे आए थे. अरब ट्रेडर थे ये, और इन्होंने ट्रैवल लॉग किया था. ट्रैवल लॉग किया था किसके ऊपर? डिस्क्राइब्स लाइव्स ऑफ मुस्लिम्स. लाइव्स ऑफ मुस्लिम्स हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी थी, तो इनके ऊपर उन्होंने ट्रैवल लॉग किया था. किन्होंने किया था? इब्न बतूता ने किया था, जो कि एक अरब ट्रेडर थे. सेकेंड, फिर हमारे पास आते हैं पोर्तुगीज. पोर्तुगीज से हमारे लिए जो नाम हमें याद रखना है वो है हमारा वास्को द गामा. यू मस्ट हैव हर्ड दिस नेम. सो वास्को द गामा जो थे, ही डिस्कवर्ड द सी रूट फ्रॉम यूरोप टू इंडिया. तो वो भी केरल में ही आए थे. ओके. अब बात करते हैं रिलीजन्स की. तो मेन जो रिलीजन्स हैं केरल के वो 5 हैं. तो हमने देखा इस्लाम, क्योंकि अरब तो थे ही, तो इस्लाम, देन क्रिश्चियनिटी जो आई है तो क्रिश्चियन, एंड देन जुडाइज्म था, यहाँ पे ज्यूइश लोग आए थे, हिंदुज्म था, बुद्धिज्म था. सो ऑल दीज 5 वेर देयर इन केरल. कुछ ऐसे ही पॉइंट्स बताती हूँ कि एक फेस्टिवल यहाँ पे बहुत सेलिब्रेट किया जाता है. आप लोग गेस कर रहे होंगे उसका नाम है ओनम. ये बोट रेस होती है, तो ये भी हमारे केरल में ही होती है. और कुछ वर्ड्स है जैसे कि चीना वाला, जो यहाँ के फिशरमैन्स होते हैं, फिश नेट्स होती हैं, उनको हम चीना वाला कहते हैं. और जो चीना चट्टी होता है, एक चीना चट्टी होता है, जो किसको कहा जाता है? यूटेंसिल्स जो होते हैं फॉर फिशिंग, उसको बोलते हैं. सो एज वी हैव सीन, लद्दाख एंड केरल both had similar cultural influences. Chinese, Arab traders, but they are so diverse. So we can see the diversity. Ladakh and Kerala, we can clearly see
the north-south cultural influences they have. Okay. पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बुक है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया. तो उन्होंने इंडिया के बारे में बहुत अच्छी बात बोली है, इंडियन यूनिटी के बारे में बहुत अच्छी लाइंस बोली है, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ. Indian unity is not imposed from outside. It is very deep and within its fold. यहाँ पे wildest tolerance है of beliefs and customs were practiced, and variety of them were acknowledged and even encouraged. Such a beautiful line जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कही थी. और उन्होंने he only coined the word unity in diversity. So with that, I would like to just give you a revision that हमने आज क्या क्या पढ़ा है. We understood what is inequality. We understood what is diversity through the point of view of Ladakh and Kerala, how diverse they are, the geographical regions, the animals, the religions they follow, and the people who are living there. So everything is so diverse. We understood it. So in the next chapter, that is chapter 2, we will try to understand what is diversity and the discrimination which follows it. So hope you like this session, and do subscribe and come back soon. Thank you.